you, students. I would now like to kindly request the dignitaries to please come on stage. I invite Mr. Saryu Rai to please come onto the stage. I invite Mr. Rituraj Sinha to please come on stage. I invite Dr. Sanjeev Anand to please come on stage. I invite Mr. and Mrs. B. Chandrasekhar to please come on stage. I request Mrs. Shripriya Dharmarajan, Dr. Juhi Samarpeta, and Mr. Satish Kumar Singh to please come onto the stage. Ladies and gentlemen, later in the day today, we are having technical sessions related to the harnessing the power of nature in different tech rooms, and there are chairpersons who will be heading these technical sessions, and I'm very happy to welcome them amongst us today. I request Mrs. Sudha Dilip to kindly welcome Professor Sharat Sari.
अपने प्रबंधन का दायित्व समझा है, शासकीय प्रबंधन का, शैक्षणिक प्रबंधन का। जो नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों का उपयोग उनका क्रियान्वयन हम उसके उद्देश्य के अनुरूप करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि जो शासक वर्ग है, जो नीतियां बनाता है, उसका दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति क्या है। वो अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा समझता है या प्रकृति पर शासन करने वाला, नेचर पर डोमिनेट करने वाला एक एंटिटी के रूप में यहाँ है। इस सवाल का जवाब हम खोज लेंगे। और जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग मतलब कि जिसके पास जिम्मेदारियां हैं, वह जिम्मेदार वर्ग अगर अपने कदम इस तरह से उठाता है और अपने आप को प्रकृति के बीच का मानता है, अपने आप को उसका हिस्सा मानता है, और यह मानता है कि हम प्रकृति में सुधार करने के लिए नहीं अवतरित हुए हैं, बल्कि प्रकृति में सुधार होगा तो हमारे भीतर भी सुधार होगा। इस उद्देश्य के साथ अगर जिम्मेदार तबका काम करेगा और जिम्मेदार तबका को काम करने के लिए शिक्षा क्षेत्र के भीतर से कोई आवाज उठेगी, तो जो चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना करने के लिए हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। आज हम इस विषय पर विचार इसलिए कर रहे हैं कि कई चीजें आज ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में पहले हमने सोचा नहीं है। विकास मनुष्य का एक स्वाभाविक क्रम है, और विकास होता है किसी से? विकास होता है हमारे संसाधनों से। जो संसाधन है प्रकृति के भीतर ही वे संसाधन है, वे मौलिक संसाधन है। उन्हीं के प्रसंस्करण से हम विकास की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उस ऊंचाई पर पहुंचने के पहले जो हमारी भारतीय सभ्यता रही है, भारतीय विचार रहे हैं, इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत सारी ऐसे बातें कहे हैं जिनको हम सेमिनारों में, संगोष्ठियों में कोटेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और हम प्रयास करते हैं कि उन विचारों को हम फिर से अपने यहाँ लागू करें, अपने यहाँ लाएं। और विकास की स्थिति में, उत्तरोत्तर विकास की स्थिति में, भौतिक विकास भी, आध्यात्मिक विकास भी, और जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन सभी को अगर हम एक नज़र से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन सबका प्रभाव हमारी प्रकृति पर हुआ है। हम आगे जो भी कदम बढ़ाएंगे, हम एक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब हम केवल प्राचीन काल के मनुष्य जैसे हैं, हम प्रकृति के साथ ही रहते हैं, उसी के अनुरूप जीते हैं, तो वैसे ही हम रहेंगे या हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। जब ये विचार किसी के दिमाग में आया तो वैसे कार्य, वैसे कार्यक्रम शुरू हुए जिससे हम प्रकृति के भीतर ही जो उपलब्ध है संसाधन, उनका ही इस तरह से हमने परिष्कार किया कि हम उस स्थिति से आगे बढ़े। सबसे पहले आग सामने आई। कहते हैं कि जब सबसे बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन विकास की दिशा में हुआ, तो पहिया का बनना था, चक्का बना, तो चक्का विकास का एक तरह से आरंभिक स्रोत है। और धीरे धीरे ऐसा करके हम आगे बढ़ते गए। यानी पहले हम प्रकृति के साथ उसी तरह से रहते थे जैसे अन्य जंतु हैं, अन्य जानवर हैं, हम वैसे ही रहते थे। पर मनुष्य के मस्तिष्क ने ये सोचा कि हमको बदलना है, हमको जो कष्ट है, तकलीफ है, उनको दूर करना है। तो धीरे धीरे उसने आविष्कार करना शुरू किया, और आविष्कार, सारा का सारा आविष्कार प्रकृति में जो तत्व विद्यमान है उन्हीं के माध्यम से हुआ। तो आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं,
हम ये महसूस नहीं करते हैं उस समय की बात जब हमने आरंभ किया था, विकास की तरफ एक कदम रखा था और इसके लिए हमने शिक्षित होना आरंभ किया था, तकनीकी ज्ञान आरंभ किया था। तो उस समय जो प्रकृति के तत्व थे वे प्रकृति के मूल तत्व आज गौण हो गए हैं, और जो डेरिवेटिव्स हमारी हैं हम उससे आगे बढ़ते गए हैं सतह दर सतह। तो हम इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी प्रकृति की जो ओरिजिनलिटी है या ईश्वर ने इन चीजों को बनाया है। हमारे क्या है कि क्षितिजल पाव गगन सवेरा पंच रचिते अधम शरीरा। तो ये 5 मुख्य चीजें हैं प्रकृति की। इनका संरक्षण करने के बदले में हम जो कदम उठा रहे हैं उस कदम का इन पर प्रतिकूल प्रभाव कितना हो रहा है, आरंभिक दिशा में हमने इसको सोचा नहीं। इसलिए कहा जाता है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है कि जितना भी हमारा सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, हमें उसमें भूल जा रहे हैं कि हम कालिदास की तरह काम कर रहे हैं। जिस वेरी बेस पर, जिस आधार पर हम स्टैंड कर रहे हैं, हम उसी को विरोध करते जा रहे हैं। आगे तो बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो आधार है वो आधार क्षीण होते जा रहा है, उसका क्षरण होते जा रहा है। और एक समय जब चिमनियों से धुआं निकलता था तो उसको विकास का द्योतक माना जाता था। फैक्ट्री लग रही है, विकास हो रहा है। धीरे धीरे जब इसकी बहुतायत हुई और शिक्षा की शक्ति ने जब इसको और विस्तृत आयाम देना शुरू किया तो हम धीरे धीरे पाने लगे कि इससे प्रदूषण भी होता है, और प्रदूषण हमारे लिए नुकसानदेह है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। और कई जगह नियंत्रण हुआ है। तो एक समय जो प्रगति का द्योतक माना जाता था, आज हम मानते हैं कि हमारे प्रगति में बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो विकास की यात्रा हमारी धीरे धीरे जो आरंभ हुई, उस यात्रा में हमारे किसी भी कदम का प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति पर क्या हो रहा है आरंभिक दिशा में विचार नहीं किया गया। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना जब इस देश में बनी तो उस योजना में इसकी सोच उसमें रखी गई, और तब हमारे सभी परियोजनाओं के बारे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात चली। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन होना आरंभ हुआ। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, यह अध्ययन भी बढ़ते गया, फिर ये कहा जाता है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। नई चीजें याद हुई, कंपाउंड्स हमारे सामने आए, कंपाउंड्स हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। जो मूल तत्व प्रकृति के हैं, जो वैल्यूलेस है, जो हमें मुफ्त में मिले हैं, जिसकी जितनी अधिक जरूरत हमको जीने के लिए है, प्रकृति ने हमको उतना ही मुफ्त में वह दिया है। सबसे आवश्यक हवा है, हवा की कोई कीमत नहीं है। पानी है, पानी की भी कीमत नहीं थी, अब तो पानी की कीमत होने लगी है। तो जो प्रकृति ने हमको जीने के लिए जो हमको अत्यंत आवश्यक है, वह उतना ही मुफ्त हमको मिलने लगा। और हम आज भी जब इसकी कीमत नहीं समझते, और हमने अपने एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनाए हैं, वे कंपाउंड आज हमारे लिए बहुत अधिक कीमती हो गए, हम उनकी कीमत आंकते हैं। तो विकास की इस दिशा में विज्ञान और तकनीकी ने जितनी लंबी छलांग लगाई है, उस छलांग लगाने में जो भी कदम होंगे, सबका कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। अब साथ ही साथ अगर शिक्षा के क्षेत्र की शक्ति का उपयोग हम इसमें करें, इस प्रतिकूल प्रभाव को हम कैसे कंटेन कर सकेंगे, कैसे मिनिमाइज कर सकेंगे। इसको जीरो तो नहीं कर सकते हैं, मगर हमारी टॉलरेंस लिमिट है, उसके भीतर हम इसको कैसे रख सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। आज यही बड़ी चुनौती है। जितने नए नए आविष्कार हमारे हुए हैं, उन आविष्कारों के प्रतिफल सामने आ रहे हैं।
आज कभी कभी बहुत हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च जर्नल्स में, तो बड़ी भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है कि आगे क्या होगा। प्लास्टिक जब हमारे सामने आया 66 67 में, तो हम लोगों को लगा कि बड़ी अच्छा पदार्थ हमारे सामने आ गया, इसका हम बहुत उपयोग कर सकते हैं। और दुनिया की सरकारों ने हर क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग की योजनाएं बनाई उन्होंने। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के इस्तेमाल में भी हम कैसे प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार में भी अलग से निदेशालय बना हुआ है। पर जैसे जैसे समय बीता और प्लास्टिक की विभीषिका सामने आने लगी, हम वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक को रेगुलेट करने की बात आज कर रहे हैं। मगर यह भीषण इसकी भीषणता इतना अधिक अधिक बढ़ गई है कि अब मनुष्य के रक्त में भी प्लास्टिक के अंश मिलने लगे हैं। कई रिसर्च में कहते हैं कि माँ का जो दूध है, उस दूध में भी प्लास्टिक के अंश आने लगे हैं। तो एक दिन में तो नहीं हुआ। हमारी विकास यात्रा हुई है जिसका हम गुणगान करते हैं। उस यात्रा के जो इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं, अब उन पर जाकर विचार करने का प्रयास हो रहा है, विचार करने की कोशिश हो रही है। और हम लोगों के लिए वह सुखद दिन होगा जब हमारी यह कोशिश सफल हो। शिक्षा, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब एक साथ चलेंगे तो हम इसको संरक्षित कर सकेंगे। आज यही चुनौती है, और इस चुनौती के संदर्भ में आज जो संगोष्ठी हो रही है, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन का जो बड़ा एरिया है, उसके हम एक हिस्से को आज भी जो रिसर्च, ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में बन रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, हम देखेंगे तो इतने इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, इतने साइंटिस्ट, इतने टेक्नीशियंस इस काम में लगे हुए हैं, जो न केवल धरती बल्कि धरती के बाहर भी जो हमारी यात्राएं हो रही हैं, उनके भी प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रभाव को तो हम कंटेन कर सकते हैं, पर कई ऐसे भी कारक इसमें से निकल रहे हैं जिनको जिनको रेगुलेट करना, जिनको नियंत्रित करना हमारे बस की बात अभी दिखाई नहीं पड़ रही। तो सवाल यही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, कैसे कदम बढ़ाएं कि मानव सभ्यता भी एक रफ्तार से चल रही है, वह रफ्तार हो ही रहे, सुनिश्चित रहे, हम विकास की दिशा में भी जाएं और हमारे कदम धरती पर भी रहें। इसलिए आज जो हमारे मानवीय प्राकृतिक संसाधन हैं और हमारे जो यौगिक संसाधन हैं, हमारे कंपाउंड्स हैं, हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनके डेवलपमेंट में हम किस तरह से एक ऐसा फॉर्मूला निकालें जिसमें प्रकृति मुख्य हो। और जो प्रयास हमारे हो रहे हैं आज, जिससे हमने आरंभ किया है, बेसिक प्रयास हो रहे हैं, पेड़ लगाना है, पौधों को लगाना है, नदियों को साफ रखना है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसकी हमको चिंता करनी है। तो हम लोगों को यही लगता है कि जब तक यह एक व्यक्ति के रूप में शिक्षा के माध्यम से संस्कार की तरह विकसित नहीं होगा, तब तक इसमें हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मुख्य रूप से आज विकास की जो एक दिशा है, उसी में शहर भी बने हैं, सभी सभ्यताओं में शहर बने हैं। आज भी शहरीकरण हो रहा है। हम तो एक अच्छे शहर में रहते हैं, माना जाता है कि हमसे बढ़िया शहर है, मगर शहरीकरण जब आरंभ हुआ, जो योजना दस्तावेज हम पढ़ते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से, जिस समय कुछ ही शहर थे, कम शहर थे, शहरों का विकसित होना आरंभ हुआ था, उस समय से ये बातें कही जा रही हैं कि किस तरह से हम लोग शहर की व्यवस्थाओं को ठीक रखें, दुरुस्त रखें, ताकि ह्यूमन हेल्थ पर उसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हो। और जैसे जैसे इसमें अधिक संसाधन आते जा रहे हैं, नई नई तकनीकी की इजाद की जा रही है, तो शहरीकरण की बढ़ती हुई रफ्तार और शहरों में समस्याओं के बढ़ने की रफ्तार, ये दोनों समान गति से चल रहे हैं। तो जो प्रयास हमको होना चाहिए कि शहरीकरण के प्रतिकूल प्रभाव को हम नियंत्रित करें, उस प्रयास की दिशा में हम उतने सक्षम नहीं हो पा रहे हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए। और आज ये सबसे बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं रोज
शहरों के बारे में, शहर बने तो हम सभी के घरों से जो कूड़े कचरे निकलेंगे, हमारे शरीर से जो दूषित पदार्थ निकलेंगे, वो सामूहिक रूप से अगर उनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो हम उनका निस्तार कैसे करेंगे। तो हमारे हर व्यक्ति के जो प्रयास हैं विकास की दिशा में, वे प्रयास ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जब हमको ग्रीन इनिशिएटिव्स हमारी क्या हो सकती हैं, ताकि विकास की रफ्तार के साथ साथ अपने अस्तित्व को बचाने का जो रफ्तार है उसका भी तालमेल बैठा सके। और यही पर आता है कि जो प्रबंधन करता है, जो शासक वर्ग है, अगर वो शासक वर्ग सबसे पहले अपने आप को प्रकृति का हिस्सा नहीं मानेगा, प्रकृति को डोमिनेट करने वाला मानेगा या प्रकृति को नियंत्रित करने वाला मानेगा, तो यहीं से इस समस्या की शुरुआत होती है। हम सभी इसके एक हिस्सा हैं और इसका एडवर्स इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी उतना ही हो रहा है जितना दूसरे पर होगा। हम दूसरे को नियंत्रित करें, उसके पहले हम खुद अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। ये अगर पहला कदम हमारी शिक्षा के क्षेत्र से निकलेगा तो मुझे लगता है जो भीषणता भयावहता दिखाई पड़ रही है उस पर हम काबू पा सकेंगे। घरों में हम चले, एक व्यक्ति का घर है, परिवार है, हम घर की सफाई करते हैं, घर साफ रखते हैं, और घर से निकलने वाला कूड़ा को हम खिड़की से या दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, वो नाली में चला जाता है। हम अपना घर तो साफ कर रहे हैं पर पर्यावरण को गंदा कर रहे हैं। हम 24 घंटे अपने घर में तो बंद नहीं रह सकते, तो बाहर निकलना होगा। तो हमारे कुछ बेसिक्स हैं, जब हम इस पर ध्यान देंगे कि हम हमारी जो ग्रीन इनिशिएटिव्स हों वो कहाँ से आरंभ हो, तो मुझे लगता है कि उसको द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन जिसको कहते हैं मैं, हमसे अगर आरंभ होगा तब तो इस ग्रीन इनिशिएटिव से हम बहुत लाभ ले सकेंगे। और ये जो छोटा कदम है, ये छोटा कदम ही हमारे भीतर ऐसी शक्ति पैदा करेगा या शिक्षा के शक्ति को इस प्रकार से विस्तार देगा कि हम दुनिया जो चुनौतियों से जूझ रही है पर्यावरण के, हम उसका भी सामना कर पाएंगे। तो हम सभी यहाँ एकत्र हैं। अगर हम क्या सोचते हैं कि हमारे अपने एक कदम उठाने से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण के ऊपर में, उसको नियंत्रित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, यह सामूहिकता हमको एक अच्छा समाज बनाने की मिल जाएगी। और इसमें शिक्षा की जो शक्ति है उसका हम उपयोग कर सकेंगे। आज विद्यालयों में बच्चों को पर्यावरण की जो शिक्षा दी जा रही है, बच्चे घरों में जाकर उनके अभिभावक अगर उसके प्रतिकूल आचरण करते हैं तो बच्चे उनको टोकते हैं। अगर हमने घर में नल खुला छोड़ दिया तो छोटा बच्चा जो स्कूल से जाता है वो टोकता है कि देखिए आप पानी की बर्बादी कर रहे हैं। अगर हम कार से जा रहे हैं और कार की खिड़की खोलकर कोई अंदर के कागज का टुकड़ा फेंक देते हैं, उसमें बच्चा स्कूल में शिक्षा पाने वाला बैठा तो टोकता है। इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। आप इसको रख लीजिए, जहाँ गाड़ी रुके वहां उसको रखिए। तो इसका प्रभाव हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में। जो बच्चे हैं ये हमारे लिए ऐसे संकेतक छोड़ रहे हैं जो हमको सावधान करते हैं। इसी तरह से शिक्षा के माध्यम से अगर हम यह बात लोगों के दिमाग में ला सकें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति है, हमको दिस फार एंड नो फर्दर का कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि विकास की दिशा में, तकनीकी विकास की दिशा में, वैज्ञानिक विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं तो एक सीमा रेखा, एक मर्यादा की रेखा हमको खींचनी होगी कि बहुत हो गया, इस हद तक हमको रुकना चाहिए। ये अगर सीमा रेखा हम तय नहीं कर पाएंगे तो प्रकृति के मूल तत्वों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। जब प्रकृति के मूल तत्व नष्ट हो जाएंगे, हम विकास की दिशा में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, उसका कोई भी लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अंत में जो मानवता है वो मानवता ही नष्ट होने की राह पर चली जाएगी। इसलिए प्रकृति का संरक्षण मतलब इसके मूल तत्वों का संरक्षण। जितना प्रकृति, गांधी जी ने कहा था कि हमारे प्रकृति में वह सब कुछ है
जिससे हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, मगर किसी के लालच को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लोभ और लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज यही लोभ और लालच सबसे बड़ा खतरा हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, हम पहले जाते हैं थे दुकानदारों की गद्दी पर, उनके चेस्ट पर लिखा था शुभ लाभ, लाभ भी होगा मगर लाभ शुभ के लिए होगा, और यह बदल गया, लोभ लाभ हो गया। तो शुभ लाभ की जगह लोभ लाभ जब आ जाएगा हमारी सोच में, तो वही स्थिति उत्पन्न होगी जो आज स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम अपना जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में इस कदर लगे हैं, हमने मान लिया आर्थिक विकास का ढांचा पैमाना कि जीडीपी का ग्रोथ कितना है, किसी भी इंडस्ट्री का एनुअल प्रॉफिट कितना है। तो एनुअल प्रॉफिट बढ़ाने की दिशा में ही अगर कोई संस्थान सोचेगा, केवल जीडीपी बढ़ाने की दिशा में ही सोचेगा, तो इंडस्ट्रीज अपने ऊपर कमांड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को कमांड करने के लिए अपने आप को ये बहुत सारे नियम पर नियम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में सबसे बढ़िया और बेहतर कानून बनाया, और मेरा मानना है कि उससे अधिक बढ़िया कानून नहीं हो सकता है, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं, इन्वायरमेंटल पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। तो उसके बाद से EIA नोटिफिकेशन 2006 में आया, हमेशा उसमें सुधार हो रहे हैं। उन सुधारों की जो रफ्तार है, हम सुधार करते करते कहाँ तक जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हम जो मार्जिनल एडजस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, ये मार्जिनल एडजस्टमेंट्स हमको कहीं नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि हम लोग बेसिक चेंजेस के बारे में तैयार नहीं हो। और आज ये बहुत कठिन प्रश्न है, हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो एक बैग मार्जिनल एडजस्टमेंट्स के बदले में हम बेसिक चेंजेस की बात करेंगे, तो शायद एक बड़ा खतरा होगा, और वह खतरा उठाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आगे आए कि हम अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे, परंतु हम ये काम करेंगे, हम मार्जिनल एडजस्टमेंट्स के बेसिस पर नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि हम कुछ बेसिक चेंजेस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज शिक्षा का जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर एक आवाज उठती है कि हम हमेशा सुधार 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 करते जा रहे हैं, इसके बदले में हम मूलभूत परिवर्तन के बारे में बात करें ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके, तो शायद ऐसा नेतृत्व विकसित होगा, ऐसे शासक, ऐसे प्रबंधक सामने आएंगे जो इसको करने का खतरा उठा सकेंगे। इसलिए आज हम जिस लेवल पर बात कर रहे हैं और दुनिया जहां जा रही है, इन दोनों के बीच में अब समन्वय बैठाने की केवल आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह कहने की जरूरत है कि जो विकास हमारा है वो विकास प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। कोई भी विकास अगर प्रकृति केंद्रित होने की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है, तो हमको उसको रोकने का साहस करना चाहिए। दुनिया में जो विकास हो रहे हैं उसकी आपाधापी में, उसकी प्रतिस्पर्धा में हम कुछ भी करते जाएंगे और ये सोचेंगे कि बायां हाथ कुछ कर रहा है, दाहिना हाथ कुछ कर रहा है, तो इस तरह से हम प्रकृति पर से खतरे को खत्म कर देंगे, तो संभव नहीं है। या तो हम लोग यह मानकर बैठे कि हमारी मानवता का, हमारी ह्यूमैनिटी का एक नया मॉडल डेवलप होगा। हो सकता है कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर यही रहे, परंतु उसमें शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरोधक क्षमताएं डाल दी जाएंगी जिन पर कोई प्रदूषण का असर नहीं होगा। तो एक संभावना है कि इस दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जेनेटिक्स में ही चेंज करने की बात कर सकते हैं। तो ये होगा, या प्रकृति ने जिस रूप में हमको रखा है हम उस रूप में सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, वह होना चाहिए। आज हमको चुनने का समय आ गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में बहस के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से
उनको इसके बारे में एक राय स्थिर करनी पड़ेगी। और मेरे जैसा व्यक्ति समझता है कि हम राय यही स्थिर करें, जो विकास है वो प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। प्रकृति विकास के हिसाब से अपना ढांचा बदलने की कोशिश हमारे माध्यम से करेगी, तो इससे नुकसान होगा। और हमारा यहाँ कंसेप्ट है प्रलय की, और उस प्रलय की दिशा में बढ़ेंगे और एक पीढ़ी आएगी जो पीढ़ी इसका शिकार होगी। इसी शिक्षा क्षेत्र के सामने जो चुनौती है आज के संदर्भ में, वह चुनौती हमारे विकास के रफ्तार ने दिया है, पैदा किया है। उसकी रफ्तार को सीमित रखना है, उस रफ्तार को नियंत्रित रखना है, उस रफ्तार को प्रकृति के संरक्षण के हिसाब से आगे बढ़ाना है। यह हम कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि आज हम जिस संगोष्ठी में बैठे हैं और संगोष्ठी कुछ फलदायी होगी और आगे भी चिंतन का इसका दायरा बढ़ेगा और शिक्षा की शक्ति परिमार्जित करके इसको इस तरह से सहेजेगी कि हम विकास और प्रकृति का ऐसा समन्वय बैठा सकें जिसमें न केवल मानव बल्कि जितने जीव जंतु हैं, छोटे बड़े, जो एक दूसरे के सहायक हैं, वे सभी संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा हो सका तो शिक्षा की शक्ति तो हम धन्यवाद करेंगे कि शिक्षा की शक्ति इस दिशा में आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से चिंतन चल रहा है हर स्तर पर, एक न एक दिन हम इसको ध्येय बनाएंगे कि हमारा विकास प्रकृति केंद्रित होना चाहिए, प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए, तभी इन सभी चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. I request Mr. B. Chandrasekhar to please present a token of appreciation to our chief guest, Mr. Salim. Thank you, sir. When we envisioned this theme of harnessing the power of education to embrace and adopt green initiatives, we also created 12 sub-themes and invited research scholars from all over India to present their research paper on any of the themes related to this international conference. And I'm very happy to announce that some of these papers have been released in the UGC CARE journal. I now request our chief guest and the dignitaries on the stage to kindly release this UGC CARE journal. It is my honor to introduce to you all the guest of honor for today's conference, Dr. Sanjeev Anand. Dr. Sanjeev Anand has published many national and international journals, edited several books, and is now currently serving as the CVC or the coordinator of the vocational cell and public information officer of Pulhan University. We are delighted to have you amongst us, sir. I request you to kindly address the audience. फेस का पूरा फील का सबका सुनो और कोई ड्यूटी तो भी है 2 बजे तक तुम नहीं करोगे पूरा अच्छे से करो पूरा यहाँ के बाद बाहर से भी यहाँ
At the outset, our most valued person, patron, the Women's Trust, Mrs. Bhanumati Neelkantan, our chief guest, Honorable Member Legislative Assembly, Sri Saryu ji, respected special guest, MD Tata Steel, USIL, Viduraj sir, Treasurer, respected Chairman, the Women's Board of Trustees, Srimati Lalita Chandrasekhar and Sri V. Chandrasekhar sir, Treasurer, the Women's College of Education, Sri Vivek Dharmarajan sir, and Secretary, Mrs. Sri Priya Dharmarajan, Secretary, Governing Body of Chairmans, Sadiq Singh ji, our Vice Chancellor, my mentor, my first mentor of Jain University, Dr. S.S. Sarji sir, and saying our ex-dean, Humanities, Kodani University, ex-principal, ABM College, Dr. Mudita ma'am, my colleague, University representative, Dr. Prabhat Singh, and Principal Dr. Juhi Samarpita, Vice Principal Dr. Monica Uppal, and dignitaries sitting on the dais and off the dais, my star teachers coming from Jamshedpur University also, participants, students, a very warm and cherished good morning to you all. Joy. It is my proud privilege to extend my heartfelt greetings, my sincere gratitude to the Women's College of Education, the entire team management for putting forth their hard work, efforts in organizing such a beautiful two-day international conference. And secondly, मेरा एक बहुत ही स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई. You all are knowing, I think आप सब जानते होंगे, और मैं तो सोशल मीडिया से जाना और कंफर्म किया सतीश जी से, और ये एक बड़ा स्पेशल बधाई है डिफेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन को, इंटायर टीम मैनेजमेंट को, और जो ब्राइट टीचर्स, पूरे स्टूडेंट्स, जो एलुमनाई हैं, ये दिस विमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन has been ranked 5th among 10 US colleges of India by the Higher Education Review published from Bangalore, Karnataka. Am I right, sir? So it is a very, really, it is an incredible academic journey of academic excellence and outstanding performance of the Women's College of Education. Definitely, it requires a big round of applause. कहते हैं कि ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, इधर भी चल पड़ेंगे, रास्ता हो जाएगा. Definitely, you made the path, but कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि आज जो भी हुआ हो रहा है या हो चुका है. आप जिस यात्रा पे हैं उसमें आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपका एकेडमिक्स एनवायरनमेंट, स्प्लेंडेड एफर्ट, एवरीथिंग ये साबित करता है योर एजुकेशन इज बेस्ट, योर टीचर्स आर बेस्ट, योर टीम एफर्ट इज बेस्ट, बट सर योर बेस्ट इज येट टू कम. Your best is yet to come, and I wish it remain with an insatiable hunger to attain this best always. मैडम प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा और हमारे माननीय विधायक जी ने भी बहुत कुछ बड़ा सारगर भी
इतना अच्छा व्याख्यान, तो मैंने सबको कहा था कि सर आपको तो पैनल डिस्कशन में भी होना चाहिए, और इस कॉन्फ्रेंस पे की नोट स्पीकर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, एवरीथिंग। मैडम ने कहा कि प्रिंसिपल मैडम ने कहा अपने एड्रेस में कि education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Definitely, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शिक्षा वो सबसे सशक्त हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान शक्ति है। नॉलेज इज पावर, डेफिनेटली नॉलेज इज पावर, बट इन माय ओपिनियन सर, the execution of your knowledge is in the right direction at the right time to attain the fixed goal. That is the real power, or else it is a waste. You just look, harnessing the power of education to embrace and adopt green initiatives. तो उसमें से आप हार्नेसिंग सब हटा, तो क्या द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स, ये भी हो सकता था। कहीं इसमें कोई बुराई नहीं थी, कोई इसमें गलती नहीं थी, ये भी हो सकता था। द पावर ऑफ एजुकेशन टू एम्ब्रेस एंड अडॉप्ट ग्रीन इनिशिएटिव्स, शक्ति का क्या महत्व है वो ग्रीन इनिशिएटिव्स को गो ग्रीन होने के लिए, ये आप एजुकेशन बताएंगे। बट दैट वर्ड हार्नेसिंग इट कॉम्प्लीमेंट्स, वो कॉम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन को, आपके ज्ञान को, कि हार्नेसिंग द पावर ऑफ एजुकेशन, उसको हम कैसे उपयोग में मैक्सिमम ले सकें। सर से मेरा विवेक सर से वो डिस्कशन हो रहा था कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्नेसिंग, सो मेनी मीनिंग आते हैं, बट आप उसको यहाँ पे पॉजिटिव वे में लें कि उसका दोहन हम, जो मेरे पास जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, उसका दोहन हम कैसे करें तो embrace and adopt green initiatives. इसलिए एजुकेशन वो निश्चित रूप से सबसे सशक्त माध्यम है कि ये न केवल व्यक्ति और समाज को आकार देता है, बल्कि उसको एक जिम्मेवार नागरिक, उसको सतर्क रहने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तय करता है कि आपको किस दिशा में जाना है और आपको अपने ज्ञान को कैसे इम्पार्ट करना है, लोगों को कैसे अवेयर करना है। तो यू कैन से, यू नो, कि the best interest you can get from any investment is to just invest yourself in education, and the best interest is knowledge, gyan, and this knowledge should be acknowledged. This knowledge should be acknowledged by your ethics, by your morality, by your spirituality, by your values, ताकि एक फिक्स्ड गोल को हम प्राप्त कर सकें। वो कहते हैं कि लाइफ इज थ्रू आउट ए लर्निंग प्रोसेस, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, चूल्हे से कब्र तक, वोम टू टॉम। शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, और इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो बड़ी गतिशील होती है। और दी फेमस कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, वो इसी और इसके पहले भी आपके संस्थान ने ट्राइबल कल्चर और सोशल मोबिलिटी पे भी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। तो ये सारी सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की जो प्रक्रिया है अनवरत चलती है। आज का यह 2 दिवसीय बौद्धिक समागम इस कारण भी प्रासंगिक है, हम इस सम्मेलन के बहाने ये जान पाएंगे कि हाउ एजुकेशन विल एम्पावर अस विथ एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज टू लिव इन सच ए वे दैट इज सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, ग्रोथ एंड ऑल। So many learned scholars are here, keynote speakers, विद्वान लोग हैं। 2 दिनों में पेपर प्रेजेंटेशन होगा,
ग्रुप डिस्कशंस होंगे, सब कुछ होगा। बट मैं कुछ चंद शब्दों में कंक्लूड करते हुए इस कॉन्फ्रेंस के डिस्कस को मैं ये कहना चाहूँगा, वी शुड एक्ट लाइक ए इको वॉरियर्स, वी शुड एक्ट लाइक ए इको वॉरियर्स फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। We should take all the initiatives to adopt this green initiatives, because the world green revolution is the best solution to arrest this policy. जब हम literally green initiatives की बात करते हैं, that is also known as go green, then we are taking some very special steps to protect this environment, the land, the water, the mountain, the forest, and the air we breathe. Green initiatives, in other words, you can say go green also. It involves implementing eco-friendly practices such as reducing of energy consumption, जैसा सर ने कहा, माननीय विधायक जी ने कहा, reducing energy consumption, minimizing waste, encouraging recycling, using of sustainable materials, and promoting, and last but not the least, promoting a culture of environmental awareness among the people and the society. So, in nutshell, we have to accept, embrace, गले लगाना पड़ेगा, हग करना पड़ेगा इस green initiatives को, to see a better future. I have firm belief the collective efforts of the institution and the outcome of this conference, loaded with all thoughtful insights and brainstorming sessions, discussions, will definitely bring a meaningful progress to adopt this green initiative. तो कहते हैं ना कि वादे वादे जाएंगे तब तो बोला, यह भारत की प्राचीन एवं सनातन परंपरा रही है कि हम सबकी बातों को बहुत सम्मान के साथ सुनते हैं, न केवल सुनते हैं बल्कि आदर के साथ उनमें जो भी कल्याणकारी बातें हैं उसको अंगीकृत करते हैं और एक फिर नए विचारों की निर्मिति करते हैं। और हमारे शिक्षा प्रतिष्ठानों का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। और इसके बाद, इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद, इसका जो भी फलाफल होगा, जो भी निष्कर्ष निकाले होगा, वो न केवल इस फेमस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए पाथेय होगा, बल्कि इस देश और इस समाज और कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। न केवल कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, बल्कि पर्यावरण सजगता एक मूल्यपरक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। बट आप सबों को, पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द एंटायर टीम मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि जहन में ये बात जरूर बैठा लें कि आपको इस मील के पत्थर की तरफ नोटिस नहीं करना है, बिकॉज आपके दिमाग में हमेशा यही बैठा के रखना है, सर जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है मेरी, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आज 21वीं शताब्दी में हम लगातार भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। ठीक उसी समय ये 2 दिवसीय सम्मेलन इस संस्थान के प्रकृति, उसका इस संस्थान के इस संस्थान का उसका प्रकृति प्रेम, शोधक नजरिया और पर्यावरण सजगता से आम जनमानस को रूबरू कराने का ये प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। और एक इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर है जो बड़ा मुकम्मल है इस आयोजन के लिए, कह के मैं आई विल कंक्लूड माय एड्रेस। उठो ये मंजर सबे ताब देखने के लिए, उठो ये मंजर सबे ताब देखने के लिए। सबे ताब का मंजर, सबे ताब एक उर्दू वर्ड है
इसका लिटरल मीनिंग होता है दृश्यावली, ग्रीनरी। ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन जब कंक्लूड होगा तो जो समा बनेगा, जो नजारा होगा, दैट इज मंजर सबेताब। उठो ये मंजर सबेताब देखने के लिए, ये नींद सत्य नहीं ख्वाब देखने के लिए। थैंक यू। Thank you for your encouraging words, sir. I request Mrs. Lalita Chandrasekhar to kindly present the token of appreciation to Dr. Sanjeev Anand. Thank you, ma'am. We have a few distinguished guests who have taken time out of their busy schedule and joined us today. We welcome Professor Dr. S.S. Razi, Vice Chancellor, Alka Jain University. I request Mrs. Sudha Dilip to kindly welcome him. We also have Dr. Mudita Chandra, former Dean, Hindi Department, Ulhan University, who has joined us today. I request Mrs. Sudha Dilip to kindly welcome her. Thank you, ma'am. Also amongst us today is Dr. Shara Jameel, MA Department, Jamshedpur Women's University. I request Mrs. Padma Shiva to kindly welcome her. We are also joined by Mr. N. Dilip Kumar, Chief Audit IT, Tata Steel. I request Mr. S. Dharmarajan to kindly welcome him. Thank you, sir. We will now have a short tea break for half an hour, after which we will resume with the keynote speaker's address. Thank you. DPMS, the dynamic principal, Dr. Johi Sabarkata ji. And let me express my heartfelt thanks to the founder, Madam Neelkanth ji, the president of DPMS, Vincent Shekhar ji, Shri Ranjit Sinha sahab, Madam Sinha ji, Dr. Ratna Chaudhary ji, Dr. Anjali Sahai ji, Professor Sanjeev Anand ji, my fellow speaker, Dr. Apratim Sahai ji, two friends of mine today, and all my learned friends, students, scholars.
एक व्यक्ति को सीखने दीजिए जो कुछ वह सीखना चाहता है और उसके आचरण को उसके सीखे हुए के अनुरूप बनने दीजिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय के इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्लास में जाइए, 1 घंटे की मान लीजिए क्लास चल रही है, तो 1 घंटे तक चर्चा परिचर्चा करने के बाद जलता हुआ बल्ब और चलता हुआ पंखा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं शिक्षक और छात्र दोनों। इसका मतलब यह है लेट हिज कंडक्ट बी वर्दी ऑफ हिज लर्निंग फुलफिल नहीं हुआ। तो ये सारी बातें जो हार्नेसिंग द पावर ऑफ एजुकेशन इज द थीम ऑफ द सेमिनार, ये तभी होगा जब हम इस पूरे इंटेंट को अचीव करें जो थिरुवल्लुवर कह रहे हैं 200 ईसा पूर्व। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट के बारे में सुना है, देखा है, पढ़ा है। आप में से जो भी हैं यहाँ पर, जिन्होंने देखा है, सुना है, पढ़ा है, वो बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, उसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे और अपने फोल्डर में रख लेंगे। इतने से भी काफी पाप धुल जाएगा। 1987 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई, ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है ये, आवर कॉमन फ्यूचर, जहां उसके बाद फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बात कर रहे हैं। गोल नंबर 13 जो क्लाइमेट एक्शन पर है, गोल नंबर 15 जो लाइफ ऑन लैंड है। और अभी मैं अपने दोस्त डॉक्टर अप्रतिम सहाय जी से बात कर रहा था, वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे कह रहे थे, तो मैंने सोचा जब उनसे सुना, मैंने सोचा मैं अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेता हूं सो दैट हमारा ओवरलैप ना हो और वो ही इज गोइंग टू प्रेजेंट वंडरफुल कंटेंट इन अ शॉर्ट व्हाइल। एक और सवाल छोटा सा, आप में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट पढ़ा है यहाँ पूरा का पूरा? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सम हैंड्स, बिकॉज टू मी from Jammu Kashmir to Kanyakumari, from Nagaland to Kutch, there is a large number of direct stakeholders of higher education who have not gone through this policy document. In spite of the knowing that this is a potential document, any document, not only national policy, in spite of knowing this, उन्होंने नहीं पढ़ा है। आप में से जिन्होंने पढ़ा है सब बधाई के पात्र, प्रशंसा के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसको एक बार जरूर पढ़े, तो आपको बहुत सारे विचार समझ में आएंगे। विशेष करके थिरुवल्लुवर जो कह रहे हैं 200 ईसा पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मल्टीडिसिप्लिनरिटी और बहुत सारे ऐसे इंटेंट की बात जो मैं करूंगा अचीव कर रहे हैं। एक और छोटी सी बात, क्योंकि हम सब जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स इन ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑफ 2 decades. Different stakeholders, political parties, ministries, regulatory agencies, universities, colleges, schools, faculty, non-faculty, इन सबको मिलकर करना है। So this 9.3D belongs to us. Revamping of curriculum. और जब मैं रिवैम्पिंग की बात कर रहा हूं तो मैं एक बात कहता हूं और इस बात को मैं कह रहा हूं, आई एम कोटिंग हियर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। When I am quoting Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, I will be requesting you to read at least first 30 to 35 pages of University Education Commission's report 1948-49। अब चूंकि ये BBMS कॉलेज ऑफ एजुकेशन है तो यहाँ पर इसको एक प्रतिज्ञा के रूप में 35 पन्ने 35 पेजेस पढ़वाए गए। फर्स्ट 35 पेजेस there Dr. Sarvapalli Radhakrishnan is writing, and I am quoting verbatim, universities as the makers of the future cannot persist in the old patterns however valid they may have been in their own days. With the increasing complexity of society and its shifting pattern, universities have to change their objectives and methods if they are to function effectively in our national life. Universities are supposed to change their objectives and methods. और इसलिए भी this issue on which this conference is being done can be well taken care through the revamping of curriculum. 9.3D आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में आप इसको आ जाके देख सकते हैं। Now when I am emphasizing upon 9.3D, for last 3 years I am requesting to work upon 9.3D in relation to 12.6. Now what is 12.6? 12.6 is paragraph number 6 of chapter number 12 of National Education Policy 2020 document. 12.6. Why 12.6? Because it is expecting from us to ensure global standards in the curriculum, in the pedagogy, in the assessment.
when it is expecting global standards, my dear friends, my dear colleagues, my dear students, let me share again one of my experiences which I have gained through my interactions from Jammu Kashmir to Kanyakumari and from Nagaland to Kutch. That a large number of us, the direct stakeholder of education, are not aware of the major criteria of NAC and major parameters of NIRF. When I am using the word criteria, I am referring the old version of NAC, that is NAAC wala NAC. Now under the new version of NAC, NAC wala NAC, उसमें हम attribute शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. So when they are not aware on the attributes of NAC, the parameters of NIRF, the sub-parameters of NIRF, and at least two global frameworks. There are many frameworks, Webometrics, ARWU, QS, Times, but at least two I will be recommending here, that is QS and Times. आप सबसे आग्रह है कि जो NAC है, NIRF है, Times है और QS है, इनके indicators, इनके parameters पर you need to have your basic understanding. Once you will be having your basic understanding, my dear friends, believe me, wherever you will be going to discuss on curriculum, pedagogy, assessment, governance, research, any dimension related to education, you will be in a better position to contribute. You will be in a better position to contribute when you are going to deal with your teaching learning process, your research process, your governance process, your intensivity process, or any intent of higher education. एक व्यंग अक्सर मैं सुनाता हूँ, खास करके जब नए ऑडियंस मिलते हैं, स्वामी रंगनाथानंद जी के शब्दों में, which he has quoted in his book, referring some American educationists, but I am using this sarcasm in the name of Swami Ranganathananda ji. Once he was asked, Swami ji, what is education? Swami ji, what is education? Swami ji said, education is something mysterious. Education is something mysterious which passes from lecture note of a professor to the notebook of a student. नोटबुक पे पहुंच जाती है कलम के माध्यम से, बिना दोनों का दिमाग इस्तेमाल हुए. Why I am saying this? Because revamping of curriculum, revamping of pedagogy, revamping of assessment is to be taken up. Day before yesterday, I was speaking to one professor who was Vice Chancellor of many universities, and he has been given one project to look at different universities of India, how far they have worked upon implementing national education policy. तो वो मुझसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किन किन मुद्दों पर हम देखें. So I shared कि हम बेसिकली तो हम यूनिवर्सिटीज को इस मुद्दे पर देखें कि उन्होंने अपने करिकुलम में क्या बदलाव किया है. एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ. जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और उसके बाद अलग अलग विश्वविद्यालय में मेरा जाना हुआ, तो दो तरह की बीमारियां मैंने देखी, एक वाइस चांसलर के लेवल पर और एक चीफ मिनिस्टर के लेवल पर. वो ये कि माय यूनिवर्सिटी इज नंबर 1 इन इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, माय स्टेट इज नंबर 1 इन इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. और ये इतना ज्यादा रेथोरिक हो गया कि मुझे थोड़ा इरिटेशन और गुस्सा सा आने लगा. So I was delivering one lecture at ministry where vice chancellor was presiding. Then my turn came. I said number 1 in what? Curriculum आपने बदल लिया, pedagogy आपने देख लिया, assessment आपने देख लिया, governance आपने कर लिया, ordinances बदल लिए, acts बदल लिए. Then number 1 in what? Even to the extent to the fact कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा डॉक्यूमेंट भी नहीं पढ़ा गया है यूनिवर्सिटीज में. So हमें इस एक एटीट्यूड के साथ देखना है. तो बीमार का इलाज. आज जब मैं बैठा और वो 6 बच्चियां हमारी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन करके वो जो गाना गाया उन्होंने, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने इस गाने के बोल नोटिस किए. So everything in this conference, this is unique conference, this is first time in my life जहां पर सब कुछ कॉन्फ्रेंस के हिसाब से है. चाहे मैं वो पैड यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं पेन यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं झूला यूज कर रहा हूँ, चाहे मैं वो सुबह का जो वेलकम सॉन्ग है वो सुन रहा हूँ. एवरीथिंग इज इन लाइन विद द कॉन्फ्रेंस. और जब लड़कियां गाना गा रही थी, उसके बाद जो हमारे एमएलए साहब थे उन्होंने जिक्र भी किया, क्षितिजल पावक गगन समीला, क्षितिजल पावक गगन समीला. 5 पंचभूत, इसको हम बोलते हैं पंचभूत. इन पंचभूतों में कोई भी एक एलिमेंट गड़बड़ होगा, ये पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा. और अभी आप देखो एयर का एलिमेंट गड़बड़ है, वाटर का एलिमेंट गड़बड़ है. तो पंचभूत. Now this panchbhut is to be brought in the
पंचकोशीय अवधारणा, 5 सेट्स, पंचकोशीय अवधारणा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। एटलीस्ट स्टैंडिंग इन इंडिया वी कैन सी कि जो हमारा ऋषि था वो कोशों के बियॉन्ड गया, और जब वो 5 कोशों के बियॉन्ड गया, उसका तादात्म्य स्थापित हो गया प्रकृति के साथ। और इसीलिए पाराशर कह रहे हैं, 2-3 मिनट और, हाँ, इसीलिए पाराशर जो है उस समय लिख रहे हैं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ मूव कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो आज तक आपको सही दिखाई पड़ता है। सो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन कोशों को पार करके वो गया। अब इन कोशों की तो हम बात करते हैं, लेकिन भारत भर के वहां तक पहुंचना है, हमको हर एक कोश को डेवलप करना होगा, हार्मोनाइज करना होगा। सो हाउ टू डेवलप अन्नमय कोश? हाउ टू डेवलप अन्नमय कोश? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, राइट फूड, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम। सही भोजन सही समय पर सही मात्रा में, राइट फूड, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, अन्नमय कोश डेवलप हो गया। देन प्राणमय कोश, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, प्राणायाम, हो गया आपका प्राणमय कोश। मनोमय कोश, हम्बल होना है, प्रेयरफुल होना है, भाव शुद्धि करनी है, मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश, क्रिटिकल थिंकिंग, फैकल्टी ऑफ एनालिसिस, विचार शुद्धि, और देन यू विल बी रीचिंग टू स्टेट ऑफ ब्लिस। और इसमें को भी जो पार कर गए तो फिर आपका प्रकृति के साथ आदाब स्थापित हो जाएगा। इसीलिए भारत आंख बंद करके ज्ञान प्राप्त करता है और पश्चिम आंख खोल के ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि भारत ने आंख बंद किया, इसलिए उसका तादात्म्य सृष्टि के साथ हो गया, प्रकृति के साथ हो गया, और इसलिए और भारत ने वो बातें तब लिख दी जब पश्चिम आसपास में लिखा। एक छोटा सा मैं आपको कहता हूं कि यजुर्वेद में लिखते हैं, और जो अक्सर आपने सुना होगा, ओम दव शांति रक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतयः शांति, शांतिर विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति। What does it mean? It means may there be peace in heavens, atmosphere, water, plants and the universe. यजुर्वेद कह रहा है ये बात, हजारों वर्ष पहले कह रहा है, यजुर्वेद कह रहा है। लेकिन मैकॉले के बाद जो हमारी अकल भ्रष्ट हुई नकल में, उससे हम भटक गए। और ये जो श्लोक मैंने बोला, बहुत सारे रिचुअल्स में आप इसको सुन सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं जानते। इसी तरह से प्रोफेसर जूही जी जब आज अपना वेलकम नोट दे रहे हैं, उन्होंने माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है, ये कहने का, ये जो हमने सृष्टि में देखा 1987 में ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है, और उसके बाद हम कहते हैं ESD, और ये ESD हमारे करिकुलम का हिस्सा बनता है। सच बात ये है, हजारों वर्ष पहले ईशोपनिषद कहता है, ईसा वाश्यविदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता मां कस्यसुधनम, व्हाटएवर इज देयर इन दिस अर्थ यूज ऑल बट विद अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस। लेकिन हमारे करिकुलम, सो अगेन आई विल बी कंक्लूडिंग by saying that revamping of curriculum is to be dealt with utmost care to bring this green initiative। आजकल एक हम बात कर रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरिटी की। आप में से कितने लोग हैं जो मल्टीडिसिप्लिनरिटी को नया कॉन्सेप्ट मानते हैं? हाथ उठाएं। मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज ए न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट एट ऑल ए न्यू कॉन्सेप्ट। मल्टीडिसिप्लिनरिटी इज ए आइडिया व्हिच इंडिया हैज ऑलरेडी एग्जेम्प्लीफाइड। जब भारत कभी विश्वगुरु रहा था, मल्टीडिसिप्लिनरिटी वाज दी। प्रोफेसर ने जब भाषण खत्म हुआ, एक सवाल पूछा गया मुझसे कि सर ये हमने मल्टीडिसिप्लिनरिटी, पहले तो उन्होंने कहा वी आर नंबर 1, ठीक है भाई नंबर 1 आप ठीक है। फिर बोले कि हमने मल्टीडिसिप्लिनरिटी में ये सब्जेक्ट दिए हैं मतलब आपने दिए हैं, मतलब यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव, दे आर सपोज्ड टू चूज। स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू मेक देयर लर्निंग बास्केट्स। You are supposed to create an institutional frame where you can keep the number of choices. आपने दिए हैं मतलब पूरी आत्मा ही उसकी मार दी आपने। So that is why I am requesting you all to read policy document carefully, especially 9.3D in relation to 12.6, number 1, number 2, paragraph number 2 of page number 3,
where SDG is being mentioned. SDG mention हो रही तो आप उसके सारे aftermath हैं. SDG 17 SDGs, all the sustainable development goals are integrated, and then the respective targets of each goal. Number 2. Number 3, I need your attention on paragraph number 4 of page. Developmental faculty. Reduce content, developmental faculty. This has been written in the paragraph number 4, page number 3 of National Education Policy 2020. वहाँ कह रहे हैं education thus must move towards less content and more towards developing how to think critically, how to solve problem, how to think innovatively, how to be multidisciplinary, how to innovate, how to adapt. और फिर इसके लिए जो implications है pedagogy के, वो pedagogy भी वहाँ mention की गई है, और उसके जो implication है curriculum के लिए, वो भी वहाँ mention किया गया है. इसलिए paragraph number 4. This will make you understand, क्योंकि हमारे यहाँ curriculum हम faulty curriculum पढ़ा रहे हैं. The very process of making curriculum is faulty, क्योंकि मुझे लगता है जो भी यूनिवर्सिटी सिस्टम के लोग हैं वो एग्री करेंगे. जब हमारे करिकुलम हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? अच्छे अच्छे करिकुलम लेते हैं. चेन्नई से अच्छा ले लिया, दिल्ली से अच्छा ले लिया, मुंबई से अच्छा ले लिया, उस अच्छे से अच्छा चुन लिया, उसको यूनिट्स में डाल दिया, ऊपर आउटकम जोड़ दिए बिना सिर पैर के, नीचे रेफरेंसेस जोड़ दिए बिना किसी लॉजिक के, और हमारा करिकुलम बन गया. और इस चक्कर में जो ओवरलोडेड है करिकुलम हमारा, वो तभी ठीक होगा when we will be understanding page number 5 and page number 6 of National Education Policy 2020, where guiding principles have been mentioned. Respect for diversity, respect for local context, flexibility, multidisciplinarity, multilingualism, synergy in curriculum, many more principles. So page number 5 and page number 6. मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनलाइज हो जाएगा. झारखंड के विश्वविद्यालय में मैं किसी विजिट पर था, तो वो गुजरात का कुछ फोक पढ़ा रहे थे. तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुजरात का फोक क्यों पढ़ा रहे हैं झारखंड में? झारखंड इज वेरी रिच सो फार एज फोक इज कंसर्न. तो द काइंड ऑफ रिस्पांस आई रिसीव, आई इमीडिएटली कुड इन्फर कि ये पोर्शन उन्होंने गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी से लिया होगा, तो आ गया है. They are innocent. So my dear friends, my dear colleagues, these were the concerns which I wanted to share with you. I will be concluding my deliberation with 2 lines. मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटके हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. हम फिर हो रही है, हम निकल पड़ेगी. एक बार फिर से कॉलेज के पूरे मैनेजमेंट को, स्पेशली दी डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर सोही सवक्ता जी को मेरा Thank you, sir. I request Mr. S. Dharmarajan to kindly present the small token of appreciation to Dr. Ashish Srivastava. We will now hear from our second keynote speaker of the day, Dr. Apratim Sahai, and to introduce him, I request Dr. Surina Bulmersi. Good afternoon to all the dignitaries present over here. I, Dr. Surina Bulla, on behalf of BBMS College of Education, feel both honored and privileged to introduce our esteemed guest, keynote speaker, Dr. Apratim Sahai. Apratim Sahai is a climate policy expert who works with social movements and governments. He is currently co-director of Net Zero Industrial Policy Lab at Johns Hopkins University. He received a PhD in Lower Ajam Sheikhpur. He hails from Mumbai and lives in New York City. Apratim has worked over the past decade across physics, clinician, and consultancy. As the Blue-Green Cities Follow at the Charles River Watershed Association, he organized housing advocates to lobby for climate residency in Boston. His industrial experience included consulting on projects ranging him from pollution in India, green industrial project in Brazil, to green energy transition in China. At the New Deal
New York, his policy and legislative team become the base of the federal advocacy campaign to win the largest climate bills in US history. Apritam is a co-editor to the Polycrisis on online magazine at Phenomenal World that focuses on the political economy of climate changes with an emphasis on the global south and geopolitics. His popular writing has been appeared in the New York Times and elsewhere. We are delighted to welcome Mr. Apritam Sahai as our keynote speaker. Sir, we request you to kindly take the stage and address the gathering and share your experience and expertise with us. Welcome, sir. Thank you. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. It's a huge pleasure to be back in Jamshedpur. It's really funny coming to Jamshedpur as for me it's basically associated with being in high school in Loyola and teaching dosa, Jai Chand, and going on a motorcycle along Marine Drive. So it's very funny to be back after 20 years as for this international conference organized by DBMS, and huge pleasure and thank you to all the organizers. This is an effort of hundreds and hundreds of people who have planned this for this entire year, and I'm really delighted to be here with so many wonderful speakers. And we're going to spend the next 2 years the next 2 days discussing all of these green initiatives. So I've chosen my title today to be Harnessing Education for Green, is the title of the conference. But I want to describe to you some of these global shifts, national shifts, and local shifts. So I'll sort of speak in sort of three different levels. And since Ashish Professor asked us all to read the national educational policy, I actually pulled it up because I had not read the national education policy. So I just thought I'll read out the part of the national education asks us to think about the environment. And it says 5 different objectives of this national education policy. The first objective is to promote global citizenship. And I hope that by looking at some of the global shifts that I talk about, you'll be able to learn something about that. The second is to infuse climate into climate and environment is no longer a sideshow, a single subject. It is to be integrated in all subjects, whether you're studying economics, whether you're studying history, politics, science, chemistry, physics, you will have to learn about the environment in all of your subjects. The third says it should include environmental awareness for water and air and resource conservation. So we should really concentrate upon the water, air, and resource conservation. The fourth says that we need to bring back traditional knowledge and sustainable practices. And I think, even that, the notebook that all of us have gotten, which is made of recycled paper, just tells you how important it is to continue our older traditions of paper and recycling in this modern age. And then the fifth one says it's not about the environment only. It is to improve human health and well-being through nurturing a healthy environment. So what we do to the environment, if we pollute it, we are also going to be polluting our own health. And these are basically going to be the themes of my talk today. So I'm coming to Jamshedpur from Rio, from Brazil. Last year we had the G20 in Delhi, in India. So many of you would have seen all of the world's leaders gathered in Delhi. This year it was in Brazil. And I'm sort of working with actually all of those 5 governments in that picture. The United States government, Cyril Ramaphosa is the ex-president of South Africa. This is last year. He got thrown out of power this year. Mr. Modi in the middle, Lula is the president of Brazil, and the fifth gentleman there is Ajay Banga, who's the head of the World Bank. So I'm working on green industrial policy globally with a lot of major governments.
just as a background, my current position is in Johns Hopkins University, and I also sort of write a magazine called the Polycrisis Magazine, which I encourage you to look up online. Okay, so back to the story. So the big shift that I want to tell you about here is, पहले जो environment ministers जाते थे COP के लिए या UN के Global Climate Summit के लिए, आजकल presidents और prime ministers और defense ministers और finance ministers जा रहे हैं. तो ये shift हुआ है पिछले 5-10 साल में. ये बड़ा सा shift हुआ है कि जो पहले subject था, topic था, छोटा मोटा topic था, अब हर एक देश अपना national development mission बना रहा है green जाने के लिए. कह रहा है कि ये हम प्रायोरिटी है हमारे सबके फ्यूचर्स के लिए, हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ग्रीन जाना बहुत ही जरूरी है. तो ये शिफ्ट क्यों इतना बड़ा शिफ्ट हुआ है पिछले 5-10 साल में? ये सब देशों जिन all of them that I'm advising, they all say we have to integrate एजुकेशन पॉलिसी को बदलना पड़ेगा इस शिफ्ट के लिए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, हमारे हेल्थ पॉलिसी को बदलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नाउ द सिंगल बिगेस्ट थिंग दैट विल इम्प्रूव एवरी सिटीजन्स वेल-बीइंग. सबका सेहत, सबका इकोनॉमिक and health will improve if we go green. So that's a very big shift, and I really want to stress कि ये पिछले 5-10 साल में हुआ है. तो ये शिफ्ट क्यों हुआ है? और बहुत सारे पहले वाले स्पीकर, आशीष प्रोफेसर जी भी मेरे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात किया. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द एंटायर वर्ल्ड बाय चेंजिंग द प्रोडक्शन सिस्टम. क्या था इंडस्ट्रियल सेकंड था स्टील सिटी. ये शहर में स्टील सिटी बनता है, ट्रक्स और ऑटोज और गाड़ीज बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं. टाटा एक ही कंपनी है जो देश जब भी शुरू हुई थी. ये सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है. द मेन थिंग इज स्टील, ऑटोज एंड केमिकल्स. तो वो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंपनी था. अब हम अगले रेवोल्यूशन में आ रहे हैं. ये रेवोल्यूशन है रिन्यूएबल्स का. और ये रेवोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये पिछले करीबन 20 साल से एक देश इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है. वो देश का नाम है चाइना. पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जो 1870s, 1880s, 1890s में शुरू हुआ, वो रेवोल्यूशन यूएस और यूके ने लीड किया. ये वाला रेवोल्यूशन 21st सेंचुरी का चाइना लीड कर रहा है. तो बाद में हम जो नेशनल शिफ्ट की को देखेंगे तो मैं एक थोड़ा सा केस स्टडी दूंगा कि चाइना में क्यों और कैसे ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ. Just as a matter of sort of straight facts, there's no ideology. Fact is कि अगर कोई भी आप ग्रीन मशीन लें जो हमारा पोल्यूशन को काटने वाला है, वो मशीन्स बहुत ही सिंपल मशीन्स हैं. वो मशीन्स हैं सोलर पैनल्स, बैटरीज, EVs, इलेक्ट्रिक बसेस, हाई स्पीड ट्रेन्स. ऑल ऑफ दीज मशीन्स को अगर आप देखें तो करीबन दुनिया में आधा प्रोडक्शन एक देश से निकलता है, चाइना से. बाकी 10% यूएस, यूरोप, इंडिया, बाकी सब जगहों से निकलता है. लेकिन करीबन 50% ऑफ प्रीटी मच एवरी ग्रीन टेक्नोलॉजी एक देश से निकलता है. लेकिन वो एक देश, रिमेंबर इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. तो अगर एक देश ये रेवोल्यूशन को चेंज कर रहा है, एंड दिस इज द मेन रीजन जो मैं पहले बोल रहा था कि all of the world leaders want to go green. प्रेशर उन पे आ रहा है कि चाइना अगर आधा बना रहा है सब चीज़ों का तो हम पीछे छूट जाएंगे. तो इसलिए ये सब देश भी चाहते हैं कि उन लोग भी ग्रीन, जो पहले लेस देन 1% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रहता था ग्रीन का, अब 10% हो गया है. तो इसका मतलब क्या? उसका मतलब कि जीडीपी अगर आप देखें तो पूरे देश का नेशनल प्रोडक्शन, नेशनल कंजम्पशन, नेशनल इन्वेस्टमेंट को जोड़ा जाता है तब जीडीपी बनता है. तो अगर ये सडनली 10% हो गया है देशों के जीडीपी का ग्रोथ का, उसका मतलब कि जो मैं पहले कह रहा था कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट नहीं बना. अब ये नेशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, नेशनल पावर सब डिपेंड करता है कि आप ग्रीन जल्दी से जल्दी नहीं जाएं, जल्दी से जल्दी आप जाएं. और जो
amount of money invested into green stuff जो 10 साल पहले था करीबन $200 बिलियन, अब है $2000 बिलियन, 10 गुना बढ़ गया है। तो अब हमें इस एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस है, हमें सोचना पड़ेगा कि ये व्हाट डज दैट मीन कि हमारा जॉब्स और ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम और स्कूलिंग सिस्टम को कैसे बदलना होगा। मेरा एक ही मैसेज है कि आपका जो भी जॉब हो, आप ये एनवायरनमेंट और ग्रीन टाइप के इनिशिएटिव्स आपको करने पड़ेंगे, अलग से नहीं होगा। आपका जो मेन जॉब है, अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप मैकेनिक हैं, सबको कुछ ना कुछ ग्रीन जॉब्स की तरफ जाना पड़ेगा। दैट्स माय सॉर्ट ऑफ मेन मैसेज। ये साइड शो नहीं है, मेन शो बन गया है। और ये मेन शो, जैसे मैं कह रहा था कि चाइना में करीबन 50% ये सब ग्रीन मशीन्स बन रहे हैं, इट्स नॉट, आई मीन इट्स अ ग्लोबल स्टोरी। जो भी आप ग्रीन, ब्लू या येलो डॉट्स इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दुनिया भर के every single factory that makes solar panels, that makes batteries, that makes EVs is represented on this picture. और ये मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ भी ये काम कर रहा था। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर चाइना, ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, थोड़ा सा साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में ऑलमोस्ट नो ग्रीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, एशिया में बहुत ही कम ग्रीन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है, वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, but basically many countries are currently not participating. They are buying the green things, they are not making the green things. वो बनाने में, जैसे अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर आप देखें तो जैसे इंडिया पहले टेक्सटाइल बनाता था, फिर हम कॉलोनाइज हुए ब्रिटेन से, और हमारा पूरा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को नष्ट किया गया, and then we started to only export cotton and buy the t-shirts from Lancashire. ठीक है? तो the worry is कि ये green transition में भी जो developing countries हैं, वो पीछे छूट जाएं, उनको खरीदना पड़ेगा चाइना से या यूरोप से या यूएस से, वो खुद बना नहीं पाएंगे। So the main job that I see for a lot of the people who work on green policy now, such as me, is to make sure कि हर एक देश participate कर पाए इस green development में, ताकि वो वापस colonization type का रूप नहीं ले ये transition. So maybe now that was a global picture. अब मैं shift करूँगा national picture में कि चाइना कैसे इतना dominate कर पाया, and it's like I said, बस last 10-20 साल की ये कहानी है। So in the lifetime of मैं जब यहाँ पे शुरू किया था 2002 में, जब मैं जमशेदपुर पहली बार आया था, उस वक्त चाइना और इंडिया करीबन very close, येलो बार और रेड बार चाइना का जीडीपी है और इंडिया का जीडीपी है, very close, maybe 2 गुना ज़्यादा, पर अभी हम लोग 4-5 गुना ज़्यादा उनका बड़ा जीडीपी है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21st सेंचुरी के लिए। दो सबसे जायंट देशों जो हैं एशिया के और दुनिया के, उन लोग कैसे ये ग्रोथ मिरेकल इन लोग का हुआ, और पर्टिकुलरली एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी का क्या रोल था इस ग्रोथ मिरेकल में। और ये चाइना का अगर आप फोटोज देखें या बहुत रणजीत सिन्हा जी से कल बात हो रही थी, वो 1982 में गए थे चाइना, फिर 1994 में गए थे चाइना, और वो कह रहे थे कि इंडिया की तरह था उस वक्त भी, जैसे बैले हैं, साइकिल हैं। हमें अगर आप फोटोज पुराने देखें तो इट वाज अ साइकिलिंग सॉर्ट ऑफ सिटी। तो कैसे वो चाइना इतना 20 साल में इतना जल्दी कैसे बढ़ा? तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आंसर करने की कोशिश करूँगा। This is just a story जो मैं बता रहा था, the comparison between India and China. China was about twice the manufacturing state of India. अभी वो कहीं ज़्यादा है. India has gone from 2% to 3%. China has gone from 5% to 30%. So it's an extremely dominant manufacturing state. अभी क्यों ऐसे हुआ? This is the same story. It's not much of a race. Race होता है कि तो आगे पीछे कोई हो. China is now greater in manufacturing than the next nine countries combined. तो इंडिया जो मैं कह रहा था करीबन 3% of global production,
value added, चाइना का करीबन 30%, so it's about 10 times bigger in manufacturing. And like I said, this is a very rapid change. 20 साल पहले जितने लोग इंडिया में अभी फार्मिंग करते हैं, करीबन आधे लोग इंडिया में फार्मिंग करते हैं, 20 साल पहले चाइना में आधे लोग फार्मिंग करते थे. So how did this shift happen is what let's try and figure that out. So the main thing that happened about 30, 40 years ago was China started to make enormous investments in education, health, or food policy, nutrition policy. So yeah, basically every human being in China started to become literate. जैसे literacy rate हमारा है करीबन 25% अभी भी illiterate है, China का literacy rate 1% से कम है. So basically बहुत investment गया है schools, colleges, universities, basic education में. And the basic story is these investments in education, health, and nutrition, that has laid that foundation for this explosive growth in the last 20 years. And just so that you get a sense कि education कितना important role play किया चाइना के policy में, आप देखेंगे कि China the yellow bar is all of the engineers being produced in China. And the orange is कितने सारे लोग education, जैसे आप लोग सब college of education में कितने सारे लोग education के degrees ले रहे हैं और कितने सारे लोग engineering के degrees ले रहे हैं. तो देखेंगे बहुत ही huge component है education और engineering का. तो education का जो policy था हम लोग का focus किया engineering और education पे. हमारा education policy focus किया ज़्यादा humanities, law, business पे. एजुकेशन में करीबन 5% है हमारे ग्रेजुएट्स, उनके हैं करीबन 10%. इंजीनियरिंग है हमारा है करीबन 10%, उनके हैं करीबन 40%. So it's a huge difference in not just investing in education, but investing in what kinds of education. The second thing, health, मैं बोला था education policy काफी अलग है. दूसरा है health policy. So health policy is basically food policy. अगर लोग का सेहत अच्छा है, they do not get diseases. We'll be hearing more about that from Dr. Sinha's talk later. But basically, the healthier you are, the more food that you have, the more fats and proteins that you eat, the healthier your brain and healthier your body and fewer diseases. तो इसका best example है कि हमें लगता है कि टीबी जो है वो एंटीबायोटिक जब आया 1945 में तब टीबी कम हुआ. लेकिन आप देखेंगे कि ये यूएस का फिगर है, बट ये ग्लोबल पिक्चर है कि टीबी एक्चुअली कम ज़्यादा होता है जब लोग हेल्दी हैं और उनके पास अच्छा घर है. अगर वो स्लम में रहते हैं और 5, 10, 15 लोगों के साथ रहते हैं तो टीबी जल्दी से फैलता है. So the main investment that China made in the last 20-30 years is वही दो चीज़, food and housing. और अगर आप उन दोनों चीज़ों पे आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिएगा तो हर एक डिजीज कम हो जाता है. And then what does that mean for GDP? If that person is not diseased, they can work harder. वो साल में अगर 300 दिन working days है, 300 दिन काम करेंगे. They will not fall sick. They will not have a lot of off days. So country का GDP भी बढ़ता है. So investing in health and education pays off in GDP growth. It pays off obviously in the health and well-being of every individual person, but it also pays off in the country's economic output. Third thing is the war on pollution. So health की हमने बात की, education policy की बात की, and the third thing is ये war on pollution. So you might remember that this is the main problem that when we say in India में environment का crisis है, सब लोग कहेंगे हाँ crisis है air pollution का. Air pollution अगर आप देखें लोगों के बहुत दिमाग में, क्योंकि टीवी आई गेस लोग ज़्यादा देखते हैं, लगता है कि सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम है, दिल्ली में एयर पोल्यूशन है और कहीं एयर पोल्यूशन नहीं है. ये सैटेलाइट पिक्चर है, पूरा लाहौर से ढाका, कानपुर से लखनऊ, दिल्ली से पटना, हर जगह का ऑलमोस्ट एक ही टाइप का पोल्यूशन है. थोड़ा 10% आगे पीछे हो सकता है AQI, but it's basically the world's biggest pollution crisis is हमारा Indo-Gangetic Plain. Very simple. क्यों? क्योंकि बहुत सारे sources हैं, बहुत सारे power plants हैं, blast furnaces हैं, trucks हैं, गाड़ियाँ हैं, और 100 करोड़ लोग
रहते हैं, if you add up Pakistan and Bangladesh, ये इसी बेल्ट में। तो चाइना का भी यही प्रॉब्लम था। तो चाइना ने कहा कि ओके वी नीड टू रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व किया गया? अगेन एजुकेशन पॉलिसी को बदला गया और एयर पोल्यूशन इंजीनियर्स, वाटर पोल्यूशन इंजीनियर्स, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीएचडीज बनाए गए, ताकि उन लोग जाके एयर पोल्यूशन का अगर इतना ही बड़ा क्राइसिस है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि ये इनॉर्मस हेल्थ क्राइसिस है ना, दिस इज नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन क्राइसिस, इट कॉजेज एज यू नो, आई मीन हम लोग सब लोग के सेहत पे अफेक्ट करता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग का नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्ट अटैक सब एयर पोल्यूशन से होता है। और अगर इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, हजारों स्टडीज होते हैं इस पे कि कितना पोल्यूशन कहाँ से निकलता है, और उसको कंट्रोल करना भी अगेन इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट यू नीड द पीपल। एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग कह रहे थे, जो जाके इनको जहाँ से भी पोल्यूशन निकल रहा है उनको जाके सॉल्व, उनको जाके काटे। And that's basically what China did. ये है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर वहाँ पे ये AQI इंडेक्स जो हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये लाइफ स्पैन पे कितना उसका इम्पैक्ट रहता है। बेसिक स्टोरीज 4 to 8 years कम लोगों की जिंदगी, 4 to 8 years। अब सोचो लोग कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं हॉस्पिटल्स पे, तो अगर हम एयर पोल्यूशन को कम करें तो यू नो ऑल ऑफ अस विल बी लिविंग अ लॉट लॉन्गर। तो ये लेकिन ये मैं पिक्चर डिलिबरेटली चूज किया, करीबन 10 साल पहले का पिक्चर। इंडिया एंड चाइना वाज रफली सिमिलर एयर पोल्यूशन। और अब जो कहानी है वो राइट हैंड साइड पे है, वो 10 साल आउट ऑफ डेट है। जो आपके दिमाग में होगा कि चाइना का एयर पोल्यूशन, इंडिया का एयर पोल्यूशन करीबन एक ही जैसा होगा, दैट्स नो लॉन्गर ट्रू। बेसिकली द गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ कि अगर इतने ही लोगों की सेहत पे प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमें सिंपल उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सब जो इंजीनियर्स आए हैं उनको बोला जाएगा, हर एक ब्लास्ट फर्नेस, हर एक कोयले के प्लांट पे आप पोल्यूशन ट्रैप लगाओ। वो पोल्यूशन ट्रैप सल्फर निकालेगा, वो पोल्यूशन ट्रैप NO2 निकालेगा, वो पोल्यूशन ट्रैप PM2.5 निकालेगा, और जो वो निकालेगा तब पोल्यूशन घटेगा। लाइक आई सेड, not very complicated, but you actually have to do it. And if this sounds to you कि अच्छा क्यों आप कह रहे हैं, obviously pollution को control करना हमें मालूम है, but you know we have a political problem कि जो लोग own करते हैं power plants को, या जो लोग own करते हैं cement और steel को, उन लोग नहीं चाहते हैं ये सब solutions लगाना। और मैं नीति आयोग को जाके देखा कि उनका क्या what is the recommendation for this for this problem। इस साल नीति आयोग अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहता है कि एक्चुअली एयर पोल्यूशन जो है सल्फर से नहीं होता है, आपको कोयले के प्लांट पे आपको पोल्यूशन का कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। So if you think education is going to solve the problem, that solves one part of the problem. But the major problem is implementing, जो कह रहे थे कि इस्तेमाल करना पड़ता है एजुकेशन को। ये काफी नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन से पावर मिल गया, इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और वो हमें प्रॉब्लम्स हो रहा है। बट एज आई सेड, अगर चाइना 10 साल में कर सकता है, 2015 to 2024 के बीच में इतना गिरा सकता है अपना पोल्यूशन, तो हम भी गिरा सकते हैं 2020s 2030s में। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि 10 साल में इतना फर्क हो सकता है। And so the effect on lifespan is already an average Chinese person is living 2-3 years longer. 10 साल में शिफ्ट हुआ, एयर सफाई हुई है, ऑलरेडी 2 साल बढ़ गए हैं लोगों के लाइफ स्पैन। So again, this is a hugely inspiring story, and I want my country, our country, to do pretty much the same thing, because we are losing 5, 7, 8 years of our life. And then the last thing is the local shift, जो ये conference हुआ है environmental awareness बढ़ाने के लिए, but main चीज awareness नहीं है। जो national education policy जो आशीष जी बोल रहे थे, हमें education policy को पढ़ना है और implement करना है। और ये बहुत ही सुंदर एक poster बाहर में था, and I really want everybody to go and check out
some of these beautiful posters that the students have put together. Actually, a round of applause for all the students. It's really inspiring, very creative. और हम लोग अगले 2 दिन यहाँ इकट्ठे हैं तो सबको टाइम रहेगा वो स्टूडेंट से बात करने की क्या उनके आइडियाज हैं एंड दिस इज अवेयरनेस जो हम कह रहे थे इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हम खूब सुनेंगे अगले 2 दिन में बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड में प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं all of those can be integrated with school children, Gurukul schools. They can go there. They can work on these eco-friendly projects to have practical learning. ये आसान shift है. It's not a complicated shift. तीसरा है जो curriculum में integrate करना है. जो हम लोग कह रहे थे कि curriculum में काफी नहीं है कि आप environmental studies एक chapter में पढ़ रहे हैं. It should ideally be एक पूरा आपका subject हो 10th standard में या स्कूल के एग्जाम में. और अगर डिमांड बढ़ेगा अगर हम मैंडेटरी बना देंगे झारखंड में कि आपको एनवायरमेंटल साइंस का पेपर लेना है 10th स्टैंडर्ड में तब टीचर्स की भी ज़रूरत फिर होगी तो एक तरफ से डिमांड बढ़ेगा दूसरी तरफ से आप जैसे कॉलेजेस में लोग सीखेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन को करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाए और फिर आप ऑल ऑफ यू विल बी बेसिकली एम्प्लॉयड टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल्स. And then the fifth point that Ankita Kumar makes here is कि community को भी involve करना पड़ेगा. अगर air pollution जैसा crisis जो है, मैं क्यों air pollution चुना? Actually मैं एक second बोलना चाहता हूँ. मेरे पापा यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे chief commissioner थे income tax के, and he died very suddenly of a heart attack 2 years ago. And I've been asking myself, what is the reason for a 62-year-old man to die very suddenly of a heart attack? And I have a lot of family members, बहुत सारे हैं जो 60s, 70s में हैं. All of them have heart issues. And सब रहते हैं पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जमशेदपुर में रहते हैं. And basically जो वो statistics जो मैं दिखा रहा था, वही statistics are made up of people. ठीक है? Statistics are just an aggregation of lived individual people. So if somebody like Papa can suddenly die of an heart attack at age 62, I have to ask myself the question, where was he living in the last 10, 15 years of his life? What kinds of cities was he living in? He is living in Ahmedabad. वहाँ का pollution आप देखें तो 200-300 AQI रहता है. उसके बाद जमशेदपुर में थे, डेली, especially winter महीने में 200-300 AQI रहता है. And then the last 2 years of his life he lived in Delhi. और आप सब लोगों को मालूम ही है कि दिल्ली का कितना pollution होता है. So when we look at these figures, कि average North Indian का life span 5-6-7 साल कम होता है pollution के कारण, we really want to think how. Thank you, ma'am. I request Mrs. Gayatri Kumari to kindly introduce Mr. Omkar Avinashi. A very good afternoon to one and all present here. We have listened with rapt attention to great eloquent speakers. Now we have another gem of a person, Mr. Omkar Avinash Shinde. Mr. Omkar Avinash Shinde. I want to introduce the Head of Environment Management at Tata Steel's Environment Center of Excellence, our distinguished leader with over a decade of expertise in environmental research, strategy and innovation. As Head of Environment Management at Tata Steel's Environment Center of Excellence, he spearheads transformative initiatives to embed sustainability into corporate operations across India, Southeast Asia, the UK and the Netherlands, renowned for developing the proactive environmental policies and refining GHG performance assessment protocols. Sir brings unparalleled proficiency in ESG data automation and analytics, alongside expertise in global ESG reporting frameworks such as CDP, DJSI, and GRI. A trained TBEM assessor with a strategic mindset, Sir is passionate about understanding what drives sustainable action in individuals. Beyond his professional pursuit,
He is an avid reader and traveler, continually seeking insights to inspire innovation in sustainability practices. Welcome, sir, for your presentation. So, thank you so much for inviting me over here. Um, I would like to clarify that this is just a replacement. I think Dr. Chakravarti was not in his office, and hence I'm now going to fill his shoes, which is a very difficult part. But this is a very interesting conference and a very interesting crowd that I'm going to address. The topic that we had submitted to the conference was purely technical. We're going to talk about data, we're going to talk about some dashboards. But I think a good conversation has been started by Professor Ashish. I was fortunate to listen to him and then Professor Sahai. Um, Interestingly, what they have said is the right stage for what conversation I would like to have with the students, the faculty, and the education professionals or experts in this field that are gathered over here, right? I am the head of environment, but I am from the Center of Excellence, and the mandate that we have in Center of Excellence is to promote the best practices, promote and identify those projects which will take Tata Steel to be the best in the world in terms of environmental sustainability, right? Uh, you have seen all over the place, right? The statements speak for themselves. The figures, you don't need to introduce them at all. If you speak one line about it, everybody can recognize who has spoken. So that is the legacy that Tata has, and community has always been at the center of everything that they do, right? So nobody disagrees this part. And continuing that legacy, continuing that phase of industrialization, which was the start, which was started here in Jamshedpur in late 1890s. This is the place where this whole legacy started. 150 years, and from salt to steel, the conglomerate has grown. Industrialization was the need that India had, and it was fueled through education. Mr. Tata, Jay Tata, at that point in time had sponsored all the institutes of repute that you see today, right? From the ISC, the PIFR, you can name them, BRC. There are so many contributions today that we see, and those experts are the ones who are actually spearheading a lot of these frontier areas that we call, the cutting edge knowledge that's being generated. People at ISRO and so many missions that we are doing. But unfortunately, the education system right now is what is driving the students. The students are going for a rote methodology. They're not looking at the solutions like ourselves, or I am also a student. I would like to understand what is going on in the student's mind right now. What are the questions that they're asking? Dr. Sahai said an important thing. The pollution, the problem that you see around are you doing something to address it at your own level? I think I saw a video which Dr. Samarpita had, shared with me yesterday, where Dr. Chetan Solanki was speaking about, how do we start with us? How do we start with me? What can I do right now today? What can these actions help to prevent the pollution, prevent the use of these resources, the exploitation of these resources, and what can we do to improve our energy swaraj. He coined the term energy swaraj, isn't it? We have a rich heritage. We have a very beautiful green city. It is one of the most recognized industrial cities in the world. 33 to 34% of the green cover is maintained. It is one of the unique industries in cities in the world which has an industry at the heart of the city. And I would say this is fortunate as well as an unfortunate thing, because if
you go outside, if you see Maharashtra Industrial Development Centers or MIDCs and other industrial development centers, they are mostly situated very far away from the city, just because of the carrying capacity, which is a very technical term to tell that if you are emitting something, if you need to produce something sustainably, you need to also emit a few things which are not waste but are byproducts. The only thing is we have not found use of it, or we have not found the right application to it. We have not found the right solutions to convert it to the products or byproducts that we can again utilize as a circular economy concept. Right? So we want the educationists, the professionals, the teachers of today to create that curiosity in the minds of all the students that you're teaching. This is a very, very big responsibility, right? And everything that Dr. Sai as well as Professor Ashish said is to be, if you want to implement it, the students of today need to recognize what it is that they need to, what is the question that they need to ask. Is the white smoke that you see from the chimney of, let's say, Tata Steel, is that really smoke or is it steam? Or how can I treat it? Is there any use to it or not? Right? It's not just that you create something which is called as, non-participatory agitation. It has to be a revolution, but in collaboration with the industry. And that's what I am here to ask all of you. How do we bring that data? And my topic was, the power of seeing the invisible. This data that is there all around us, right? The amount of electricity that we use every day, the amount of water that you use every day, the resources that you are utilizing, which probably your parents or the students are not even looking at. How do we make it visible to each and every one of us, right? How do we question what can we do to better utilize this resource that we are very fortunate to have, but probably our couple of generations down the line, the students that we are teaching here might not be fortunate to have it. You might today buy an insurance of crores of rupees. But what is the use of that money if you are not going to have a healthy life, as Dr. Sai said, right? It's not going to be enough. No amount of money is going to buy the clean air or the trees or the biodiversity that we are right now today, fortunately, in some pockets we are enjoying, right? So importantly, we have to take this as a responsibility to make them aware. So what is the basic thing? So everything that we are doing today is data. Professor has already mentioned that there are so many policies, and then Dr. Sahai said things which we can learn from our neighbors. Right now, I'm going to talk about how do we utilize this data in a very simple to understand manner. Right? In psychology, there is a concept called as psychological distance, and in climate change, this is a very important concept. There are 4 types of distances that we see every day, in every kind of human being when you are talking about climate change. Something which is called as geographical distance, something which is called as temporal or time difference, then there is a social distance, and then finally there is something called as, you can say, a hypothetical distance. What is the geographical distance? Climate change happens somewhere far away from me. It doesn't happen to me, right? In space, it is very far away. The people in Africa or somebody in Spain, because of the floods and the calamities that are happening there, the weather patterns that are changing, the climate changes that are happening, it is happening very far away from us. It will not affect me, it is not affecting me. This is a common misconception. That is the psychological distance that is there in the minds of individuals. First one. Second one is the psychological distance of time. What we say, it is going to happen in 2100. We are sitting in 2024. It will not happen very quickly. 100 साल आराम से जिएंगे, right? Or some of us who are fortunate enough that have been, they are born early, will go very quickly. We should not be feeling any problem from all this. This is a very morbid thing to say, but this is the reality of life when you are looking at these kind of things. So that is called as temporal difference or time distance when you are looking at a person's psychology. The third thing or the third resistance to any change is the difference when we are saying something. We are saying that it is socially far away.
So मेरे relatives को कुछ नहीं हुआ है, they are not affected by climate change. Somebody very far away, some people whom we don't know are seen on news who have some problems. Some farmer in Odisha, his crops are completely flooded. It is completely destroyed. उनकी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है. मैं तो हर दिन सुबह यहाँ पे स्कूल आता हूँ, मैं टीच करता हूँ, मेरी सैलरी आ रही है, I don't care. Or the students are learning, I have to give the next unit test, I don't know whatever is the next urgency that they have, and that is what is the social distance. And the hypothetical distance again is another resistance which causes this is these concepts may not happen. There's a hypothetical angle to it. Scientific community agrees, everybody has a consensus that climate change is a reality, but then there is a hypothetical angle. अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शायद होगा या नहीं होगा, हम लोग उसके लिए क्यों काम करें? These four resistances should be your priority as teachers, as education, the experts in the field of education, as Sir said, people who are going to design the curriculum. How do you communicate with all the students? And the intention is not to create the environment of fear, because fear kills all the creativity. Fear kills whatever new solutions these young kids are going to bring. I really like the poster. Unfortunately, I have not seen it, but I will make it a point to see the exhibition outside. The student should be encouraged to think about, there should be an angle of deep thinking. What is happening? What is the problem at hand? Can I understand all the different facets of that problem? And how can I address it? At least one of it at my level, how can I address it? That is the important need that we as a society should be playing. I have a small kid. He's just 4 years old. He's also going to one of the schools in this area, right? And when he is coughing in Jamshedpur, I asked the question: is Tata still responsible for this, or is there something else which is there? And fortunately, I have the visibility of all the data that we see at the Center of Excellence, and not just the data from Jamshedpur. We see the data from 223 sites of Tata Steel in India as well as abroad. And we compare. Our job is to benchmark. Our job is to model the differences, and we have to bring out the best practices that can be implemented so that we protect the health of the community that we say is the center of everything that we do, right? And that is the continuous need for excellence, the drive for excellence that we are everyday driving. And I try to understand, and when I come across this data, I also understand that the responsibility also lies with me when I go outside Tata. When I am a normal citizen, I try to understand what is it that is contributing. Is my vehicle another thing that is contributing, adding to this? If I have my resources, can I not contribute to the EVs as Sir introduced? Can I not have a vehicle which is running on more sustainable fuel? Can I not take actions which will prevent this air from getting polluted? Can I not switch off the lights, or are these many lights necessary? Is the plastic bottle at all needed? These questions are the ones which will trigger, and these kids are asking those questions. If you show them what the conference is right now representing or intending, these kids will ask those questions. Why am I using a plastic bottle at home, but here we have the glasses, right? And unfortunately, in our day-to-day rush of things, we kill that curiosity, right? Our job at Center of Excellence is to bring all this data together. We know that safety is one of the most important priorities for Tata Steel, but now environment is also, and we now don't say safety is a metric or environment is a metric for us. Environment and safety are values for Tata. Before we start any conversation, we are now introducing the concept of having safety talks or environmental talks with the people who are listening to us, or the people who are attending those meetings. And this concept of environment talks was introduced by one of the residents. He said, what is it that today you are going to do which will at least save 1 kg of CO2, 1 kg of energy that is, being excessively utilized? Can you prevent that? What can you do today that you can, that can add that positive impact to all the things that you're doing? That is one. I think in the classes also you can have somebody like an environment monitor or an energy monitor who can look at things, whether, as Sir said, when we go out of the class,
have the ACs being shut off, have the lights being turned off, have the taps being switched off when you are not using them. This will create that culture. This will create the questions, the curiosity, which will trigger those actions. You cannot tell them today, go and turn off the tap. That beats the purpose. As I said, you cannot recommend something. It has to come from within. If they were properly cultured in these kind of environments, they will go ahead and do that, and they will ask their parents, why are you not putting on your seatbelt? Why are you not switching off the fans? Why are you not switching off the ACs? Right? And that is what we do. This is a very technical topic that I wanted to address, but I have sort of transgressed from it. Apologies for that. But hopefully, a few things to consider for everyone here. I thank the DBMS Foundation and the organization. I think this is a very brave effort at addressing all these things. As a society, as schools, teachers, we should come together more often. We should sit on the same table. We should discuss what are the most practical things that we can do. The students can really interact with us and understand what are the most practical problems that industries are facing, where they can, with their brilliant minds and intellectual ability, contribute. And we encourage that a lot. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable insights. I request Dr. Julie Samarthita to kindly present a small token of appreciation to Mr. Omkar Avinashi. Ms. Moshini Datta will now be presenting the vote of thanks, and then we will be breaking for lunch. Just before that, I just want to inform all of you that this is a zero waste conference, and you will notice that in the front row we have not kept the plastic bottles that is usually seen at the different conferences and different events. Because this is a small step for us, and we have partnered with Koru Foundation, who is our sustainability partner. So I request our guests, please don't feel shy. Please ask if you need water, and we will ensure that you will get it. We have placed steel containers. We are using steel containers, glass bottles and we have water stations also. So kindly let us know if you need anything. We will be over the next 2 days. Please let us know, and we will ensure that you get it. And we request you all to remain seated and take this pledge along with me, because when we break for lunch, and since this is a zero waste conference, we urge you to kindly stop the wastage of food. Take only as much as you want, and even at the food counters, as you would have noticed in the debate, we are not using anything which is harmful to the environment. So you may please be seated, but please kindly repeat after me. As a participant of the international conference, I commit to reducing waste, conserving resources, supporting sustainability, promoting recycling, and advocating for eco-friendly practices and products. Thank you so much. I request Ms. Moshini Datta to present a vote of thanks. Before beginning with the vote of thanks, Dr. Nandwani is here with us. I request S. Dharmarajan sir to please felicitate him.
चालू है कैमरा है इसमें काटना है I request Priya ma'am to please felicitate Mrs. Priya Sareen. ठीक है ना फिर कंटिन्यू कीजिए बाद में छोड़िए यही कंटिन्यू कीजिए Yes, ma'am. के साथ होगा प्रेस का लिए उतना कोई ऐसा नहीं नहीं खुल रहा था क्या नहीं खुल रहा था टाइम ले रहा था ना इसलिए तो लेके आ रहा अभी आप कर लीजिए वो एक के बाद में आप करेंगे प्रेस का इसके बाद जब नहीं तो आप एक काम कीजिए ना मैं कहूँ वो एक ही बार करेंगे जैसे जब थोड़ा अभी ब्रेक Gratitude is not only the greatest of all virtues, but the parent of all. A very good afternoon to all present here. We are at the end of the inaugural session, and it is my pleasure to acknowledge all those who have helped us to make this auspicious beginning. I, Maushami Datta, on behalf of GBMS College of Education, feel both honored and privileged to deliver the vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, Sri Saryu Rai ji, a respected people's representative, for graciously accepting our invitation and joining us today. Sir, your dedication to public service and commitment to sustainable development serve as a guiding light for all of us. We are deeply inspired by your vision and grateful for the encouragement you have provided through your address. I am deeply grateful to our guest of honor, Dr. Sanjeev Anand, CVC, Kolhar University, for his gracious presence. Your words of wisdom, sir, radiate a source of energy within us, encouraging us to strive harder towards our shared goals. We are truly honored to have you with us today, sir. I express a deep sense of gratitude and appreciation to Mr. Rituraj Sinha, Managing Director, Tata Steel UISL, our special guest for sharing his valuable time for us and gracing today's program. Tata Steel UISL's remarkable effort in maintaining Jamshedpur as one of the cleanest and greenest cities are truly commendable. Your leadership and dedication set a benchmark for sustainable urban management, inspiring all of us to work towards a greener and cleaner future. Thank you for your unwavering commitment and for sharing your insight with us today. I sincerely thank our keynote speakers, Professor Ashish Srivastav, Dean, Academic and Research, BHU, Varanasi, and Dr. Apratim Sahai, Co-Director, NZ IPL, John Hopkins University, USA, for sharing your expertise and innovative suggestions to various climate challenges. Your insights have inspired us all. Now we are better equipped to embrace sustainable practices and contribute to a greener future. Your expertise and commitment to the field have set a high standard for the discussions that follow. And we are truly honored to have had the opportunity to learn from your vast knowledge and experiences. I extend my sincere gratitude to Mr. Om Avinash Shinde, Head Environmental Department of Tata Steel, for his invaluable presence and contribution to this conference. Tata Steel's role as the principal sponsor demonstrates its unwavering commitment to sustainability and environmental stewardship. Sir, your expertise and leadership in promoting sustainable practices inspire us all, and we deeply appreciate in making this event
event a success. I am thankful to all the chairperson of the technical session, Professor Sunil Sarangi, Professor Sarat Sareen, Mr. R.P. Singh, Ms. Apurva Sahai, Mr. Himanshu Sheth, Mrs. Ratna Chaudhary. After lunch, we will have the privilege of hearing from them about their valuable insights and observations. Each one of you represent a distinguished institution, and it is truly an honor for us to have such esteemed individual with us today. I thank the honorable guests from various universities, colleges, and schools who have joined us today. We deeply value your support and encouragement. Your presence truly reflects your commitment to learning and contributing towards sustainability. I would also like to thank the various NGOs who have come to support us. A special thanks to all the BOT members who have graced us with their presence for this event. You are our pillars of strength. I feel deeply grateful to the management members, principals, vice principals of all DBMS units who have joined us for the event. Without your support, this event would not have been successful. I would like to thank our patron, Mrs. Bhanumati Neelakantan, and chairpersons, Mr. B. Chandrasekhar and Mrs. Lalita Chandrasekhar for their constant support and encouragement. Our heartfelt thanks goes out to Mrs. Priya Dharmarajan, Secretary, Mrs. Sudha Dilip, Joint Secretary, Management Member Padma Shri Ma'am for being the driving force behind the conduction of this conference. My sincere thanks to Mr. Satish Kumar Singh, Secretary of Governing Body, and Mrs. S. Dharmarajan, Treasurer of GBMS College of Education, for their constant support and guidance. I extend a warm welcome, a warm thank you to our Principal, Dr. Julie Samarpita, and our Vice Principal, Dr. Monica Uppal, who are the backbone of our institution and are ever willing to shoulder responsibilities and put in a lot of effort and love for each program. Thank you, dear teachers and students, for your dedication and hard work. I would also like to thank our office staff, technical team, non-teaching staff who have always stand by us to ensure the smooth functioning of this program. I am grateful to all the participants and research scholars. Your presence here reflects your commitment to advancing education as a catalyst for sustainable future. Special thanks to the media person who have joined us for covering the conference. I would also like to thank Shiv Shankar Singh sir for being a constant support and guiding us. Once again, thank you to one and all present here. Let us continue to make this conference a platform for impactful change. Finally, I extend my best wishes for the upcoming technical sessions. After lunch break, I encourage everyone to engage actively, share knowledge, and collaborate towards actionable strategies for a greener future. Thank you. Thank you. Now we'll have a break, and this will be a lunch break, and after that we'll start with our technical sessions. So all the paper presenters will, after the lunch, will go to their respective rooms. Reporters, you are instructed to take the chairpersons along with you to that room. Volunteers, kindly escort them to their respective rooms. We'll be having 7 technical sessions, 6 in the separate rooms, and 1 will be here in Kalakriti. So the audience, you are also being advised to, after the lunch, to go to your respective rooms. So we'll have a lunch break now. We'll start first with the delegates. So volunteers, kindly escort all the people on the first few rows. You are requested to please go and have your lunch. Paper presenters and chairpersons, you are also requested to please kindly leave and have your lunch after 5 minutes. And then students, we'll give you an instruction when to leave, and we'll have it row wise so that we can have our lunch in this stipulated time. So thank you, and let's meet after the lunch break. It will be a 1 hour. So
So after 1 hour, we'll all be there in our respective places. Thank you so much. There you go. ये